Friends, in this video lesson we will discuss the first two subdivisions of the past tense. Simple past tense in to be and action verbs. In to be verbs, subject and then was or were, that is the second form of the verb be, will be used. With plural it will be were, and with singular it will be was. Subject plus was were plus object if there is any. Similarly, in action verbs, subject plus second form of the verb, that is called the ed form, plus object. She worked yesterday. She did not work yesterday. While making interrogative sentence, did is used, and with did we always use the base form of the verb. Do, does, did, we use base form of the verb. She did not work yesterday. Similarly, while making interrogative sentences, did comes out of the sentence. Did she work yesterday? An interrogative sentence, interrogative mark at the end of the sentence. Similarly here, were, that is the helping verb, that is the main verb here in this sentence, comes out. Were they friends? Uses, where it is used, simple past tense, to express completed action in the past. पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है. पास्ट में आई सॉ अ घोस्ट लास्ट फ्राइडे. व्हेन डिड आई सॉ इट, व्हेन डिड आई सी इट, लास्ट फ्राइडे. और वो एक्शन लास्ट फ्राइडे को ही ख़त्म हो गया. सिमिलरली, टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट. अगर हम पूरी सीरीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. So here we have a series of completed actions which took place in the past. Similarly, to express habits in the past, when I was young, I watched lots of television every day after school. When I was young, I watched. So it's a habit of the past. Similarly, for stative verbs, for example, have, to owning something, to have, to own something, be, think, know, dislike, need, or wish, we use this simple past tense. He had a small cottage in the woods. Had is the second form of the verb has, have. Let's move on to the next slide. Here I have compared the past simple with the present perfect. There is a difference between the two. In simple past we use subject plus second form, and in present perfect we use third form with has or have. In simple past tense it's used for to express finished time, and here unfinished time. For example, finished time, we lived in Japan from 1995 to 1998. Here the time is finished. While in this sentence I have worked as a teacher since 2011, but from 2011 to when, it's not clear here, so it's unfinished time, so we use present perfect tense. Similarly, to definite time, I saw the Eiffel Tower in 2007. 2007 में मैंने आईफल टावर देखा, डेफिनेट टाइम है वो. बट वाइल रेफरिंग टू इनडेफिनिट टाइम, आई हैव सीन द आईफल टावर, मैं देख चुका हूँ, लेकिन कब, इट्स नॉट रिटन हेयर. इंडिकेट सीरीज ऑफ फिनिश्ड एक्शंस, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था. फर्स्ट रेड द बुक and then he watched the movie. It's a series of finished actions. If you are wishing, if you are trying to express your experience or result or something, then you will use present perfect. For example, she has already watched the movie 3 times. She has already watched the movie 3 times. यहाँ पे वो अपना experience या result show कर रहे हैं किसी action का, so we use present perfect tense. Let's move on to the next slide.
that has the past continuous tense. In past continuous tense, we use continuous form, that is ing, verbs first form plus ing. Similarly, to indicate past, we use was or were according to the pronoun. If it's singular, then was. If it's plural, then were. She was cooking all morning. This is affirmative sentence. She was not sleeping when he came home. It's negative sentence. was वर्ब के साथ नोट लग गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ गई. इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त was और वर्ब बाहर आ जाएंगे. हेल्पिंग वर्ब्स. was she sleeping when he came home? And where we use it? Uses to describe parallel action. कि जब वो घर आया उस वक्त she was not sleeping. Parallel action है. While I was washing the dishes, I heard a loud noise. While I was washing the dishes, I heard a loud noise. जब डिश वॉश कर रहा था मैं उस वक्त मैंने ज़ोर से आवाज़ सुनी, एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनी. तो ये पैरेलल हुए एक्शन दोनों. सिमिलरली टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे यस्टरडे, कि कल सारा दिन तो मैं गार्डन में काम कर रहा था. टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट. अगर कोई एक्शन पास्ट में हो रहा हो और होते होते इंटरप्ट हो गया और रुक गया हो, कोई व्यवधान आ गया उसके अंदर, देन वी यूज दिस टेंस. आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार. जब मैं वर्क से अपने वर्क प्लेस से वापस आ रहा था ड्राइव करके तो मेरी कार क्रैश हो गई. इंटरप्ट हो गया वो ड्राइविंग वाला एक्शन. सिमिलरली टू डिस्क्राइब रिपीटिशन एंड इरिटेशन. टू डिस्क्राइब रिपीटिशन एंड इरिटेशन. ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास. It's a repetition that he always does this. It's a kind of irritation also from the speaker side. So we use past continuous tense. I hope you have understood these two tenses. Now let's move on to the homework. You have to describe the live happenings. जो हो रहा है आंखों देखा हाल. कहाँ का? At any marriage और birthday party which you have attended, जो तुमने अटेंड की हो. कैसे करना है रिपोर्ट, उसको कैसे आपने डिस्क्राइब करना है. लाइक अ टीवी रिपोर्टर हु इज रिकॉर्डिंग अ लाइव रिपोर्ट ऑफ द इवेंट. उस तरीके से आप अपने न्यूज़ चैनल देखें. कई बार जो रिपोर्टर होते हैं कहीं पे पहुंच जाते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, देखिए ये हो रहा है, ये चल रहा है. आपने उसी तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है. लाइव एक हैपनिंग्स शो करनी है एंड यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. आई होप you have understood these two subdivisions of the past tense. Thank you.